Hello everyone, I am Archana again with you with a new video. As you know, we are started with the third chapter, that is sustainable development, and I had completed the sustainable need of sustainable development, goals of sustainable development, and after that challenges of sustainable development. In this video, we are going to discuss the sustainable agriculture. When we talk about the our nation, for example means our nation India. India is an we always talk about the India and agriculture because both the factors are correlated. Near about 70% people are related with the agricultural practices. So when we want to implement the sustainable development throughout the country, we should switch on towards the sustainable agriculture. Now sustainable agriculture means nothing but the production of food in such a way that it should not be harmful, or it should not be reversible process for the future generation, or it should not harm the ecosystem or human health. Means सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे करना है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, उससे जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर कोई इरिवर्सिबल इफेक्ट ना हो, और अभी के जनरेशन पे, अभी के इकोसिस्टम पे भी किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो. इस तरह से हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने हैं. नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ कंसेप्ट्स है. कंसेप्ट्स में बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हेन वी आर डूइंग द फार्मिंग प्रैक्टिस देयर इज नो हार्म फॉर द एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. मीन्स जो नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल साइकिल है, इट शुड नॉट बी हार्म the agricultural practices. After that, the natural resources related with the agriculture should be handled properly. For example, water है, soil है, it should be properly managed. उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए, वो जैसे है वैसे उनको मेंटेन करना है. ये एक कंसेप्ट उसमें आएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में. देन सस्टेनेबल, इफ वी स्विच ऑन टूवर्ड्स, वी वांट टू स्विच ऑन टूवर्ड्स द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स केमिकल एग्रीकल्चर शुड बी शिफ्टेड टू द organic farming. ठीक है, organic farming we know very well what is organic farming. So if we want there is a sustainable agriculture in our India, in our nation, so we should switch on towards the organic farming. Means we should reduce the use of or minimize the use of chemicals in our agricultural practices. Okay. After that, the organic farming. This is very important topic. Organic farming is nothing but the avoid of chemicals in agricultural practice. हमको पता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि हमको सेंद्रीय खेती हम उसको बोल सकते हैं, और हमें बायोलॉजिकल वे से एग्रीकल्चर करना है. अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल, जैसे मैंने पहले भी बोला था. तो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर. सो मेनी कंसेप्ट्स आर देयर, बट द मेजर वन आर organic farming means you have to switch on the agricultural practice toward the biological terms, means avoid the use of chemicals. After that, organic farming में आपको the environmental component should be discussed. After that, the socio-economic component should be there. The biophysical component should be there. अब biophysical, socio-economic ये सारी चीजें क्या है? तो biophysical का मतलब है the cycles which are running in our environment. So for example, carbon cycle is there, nitrogen cycle is there. So we should not interfere in those cycles. So that is biophysical. After that, socio-economical means we are having the agricultural practice for the production of more crop yield, and फिर market में उसका values क्या है, और फिर उसका resale कितना मिल रहा है जो farmers है उनको. Those are the socio-economic components. ये भी बहुत important है, क्योंकि if they are doing the biological practices or if they are doing the complete organic farming, so उसका cost definitely बढ़ जाएगा, because organic farming is more difficult as compared to the chemical farming. तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट जो है वो भी डिस्कस इसमें होनी चाहिए. एंड वी वेरी वेल नो द एनवायरमेंटल कंपोनेंट रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, so how we can switch on this chemical farming towards the organic farming? Several concepts are there. So first concept is crop farming, then mix
farming. After that, crop rotation, biofertilizer, biopesticide and integrated pest management. तो सारे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो लास्ट जो टॉपिक है दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो वी विल स्टार्ट विद द मिक्स फार्मिंग. नाउ मिक्स फार्मिंग जो है वर्ड हमको समझ में आता है, मिक्स प्लस फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस शुड बी देयर, मीन्स सम क्रॉप्स आर देयर विद द अदर प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल पोल्ट्री इज देयर, या फिशिकल्चर कर सकते हैं, फिश पॉन्ड कर सकते हैं, उसके बाद में और गोट फार्म्स कर सकते हैं. तो दोज आर द सप्लीमेंट्री फॉर द फार्मर्स. मीन्स एक क्रॉप ईल्ड के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेंगे. उन्होंने कुछ लगाया है जमीन में, उसके साथ में वो क्या कर रहे हैं? पोल्ट्री फार्म अगर उनके पास है, गोट फार्म है, या फिश कल्चर वो कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें उनको क्या किस चीज में हेल्प करेंगी? दिस इज ए मिक्स फार्मिंग. तो ये सारी चीजें उनको किस चीज में हेल्प करेंगी? देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ दिस मिक्स फार्मिंग. तो फर्स्ट एडवांटेज इज दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम द both sided, and small farmers जिनके पास में कम लैंड है, they can also use this type of farming. After that, they are not dependent on one type of crop. If some problem may be there, yeah, some drought or some environmental harsh condition will be there, so they are not totally dependent on the one type of crop yield. So they have some another options with them for their survival or for their socio-economical benefits हम उसको बोल सकते हैं. तो and it also maintain the crop productivity. It is helpful for the soil erosion. It is helpful for the crop yield. So many advantages are there with this technique. After that, the crop rotation. Before crop rotation, mixed farming is there, mixed cropping is there. Mixed cropping means, as the name itself suggests, mixed cropping means more than 2 crops are mixed or cultivated at a time. For example, in Maharashtra, basically the tur and the cotton seeds are cultivated side by side with at the same field. Means 2 or 3 lines of tur is crop with cotton seeds. So this is a mixed cropping. तो इसमें मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं? 2-3 लाइन डालते हैं किसी और सीड्स के एक पूरे फील्ड में, उसके बाद में 4-5 लाइन कॉटन सीड्स की आएगी, उसके बाद में फिर से 2-3 लाइन जो है वो तूर की आएंगी. तो सच टाइप ऑफ क्रॉप मिक्सिंग इज हम उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्स क्रॉपिंग? बेसिकली महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा करते हैं मिक्स क्रॉपिंग. बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा सिर्फ तूर और इसी का नहीं करते हैं, चना एंड गेहूं का भी मैंने देखा हुआ है, वीट एंड द जो चना है उसका करते हैं. तो बीच बीच में चना डालते हैं गेहूं के बीच में. सो इट इज मिक्स क्रॉपिंग. सेवरल क्रॉप्स आर मिक्स एट ए टाइम, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग. सो इन द मिक्स क्रॉपिंग द बेसिक एडवांटेज, फॉर एग्जाम्पल तूर एंड हम इसका ले लेंगे कॉटन सीड्स का. बेसिक उसका एडवांटेज, तूर इज एन लेग्यूमिनस प्लांट, सो इट स्टोर्ड द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इट इज यूज्ड बाय द बोथ द क्रॉप्स. That is first advantage of this mixed cropping. At the same time, second advantage, if pest control is also very deep advantage of this, और बेनिफिशियल हम उसको बोल सकते हैं. पेस्ट कंट्रोल होता है, वीड कंट्रोल होता है. आफ्टर दैट सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर मेंटेन. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सॉइल इरोजन जो है उसको बचाने के लिए. आफ्टर दैट सो मेनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन यू आर हैविंग द मिक्स क्रॉपिंग. सो मेनी एडवांटेजेस आर देयर. क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ सम insects or some diseases are on the tur, so it is not different types of diseases are there for the different crops. So तूर के ऊपर अगर कोई डिसीज है तो वो 3 लाइन में अगर आया हुआ है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दैट कॉटन सीड्स. ठीक है, तो वो दूसरी रो में नहीं जा पाएगा या दूसरी तूर के रो जो है वो बच जाएंगी. तो दिस इज बेसिक इंटेंशन बिहाइंड दिस क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग. सो मिक्स क्रॉपिंग इज द बेस्ट आइडिया फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम उसको बोल सकते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग. सेवरल एडवांटेज
एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं. आफ्टर दैट वेरी कॉमनली नोन दैट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल सम लेग्यूमिनस क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड अल्टरनेटली. मीन्स एक साल अगर आपने डाइकोटिलेडॉन्स लिया है या मोनोकोटिले, बेसिकली मोनोकोटिलेडॉन्स जो है वो ज्यादा अगर कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो इट विल रिड्यूस द न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सो 2 साल अगर हमने कोई मोनोकोटिलेडॉन लगाया है उसके बाद में लेग्यूमिनस प्लांट हम उसमें लगा रहे हैं तो इट विल फिक्स द नाइट्रोजन, एंड इन दिस वे the level of nitrogen increases in that particular soil. At the same time it will helpful for the build up of nitrogen cycle. It is also helpful for the production of yield. It is also helpful for the water holding capacity. It is helpful for the crop yield. It is helpful for maintaining the natural resource, soil as a lively resource. So ये crop rotation में भी बहुत सारे हमको advantages मिलेंगे. After that the biofertilizer, we are known about those biofertilizer. एक कंपोस्ट का भी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो कंपोस्ट इज ऑल्सो एन बायोफर्टिलाइजर. वी कैन यूज दैट. कंपोस्ट इज एन बायोफर्टिलाइजर. बायोफर्टिलाइजर मीन्स लाइव फर्टिलाइजर. बेसिकली मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल एज ए बायोफर्टिलाइजर. सो मेनी अवेलेबल इन द मार्केट. राइजोबियम इज अवेलेबल, देन अज़ोटोबैक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पैकेट फॉर्म. तो वी कैन डायरेक्टली एड दोज बैक्टीरियाज इनटू द सॉइल, सो इट शुड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो उनका काम क्या है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाना या उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना या अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ाना. सो बायोफर्टिलाइजर में बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द बायोफर्टिलाइजर्स. और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दे आर हैविंग. इफ यू आर एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर इन द ईयर, मीन्स जैसे 2020 में किसी क्रॉप के ऊपर हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, तो नेक्स्ट ईयर हम जब भी वो क्रॉप लेंगे तो फिर से हमको वो डालना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर. बट दिस थिंग इज नॉट हैपन विद द बायोफर्टिलाइजर. बायोफर्टिलाइजर मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल फॉर द लॉन्गर टाइम. 2 साल 3 साल फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि फिर से आप बायोफर्टिलाइजर ऐड करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द बायोफर्टिलाइजर. आफ्टर दैट द बायोपेस्टिसाइड. बायोपेस्टिसाइड में बेसिकली इन इंडिया द एक्सट्रैक्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स इज यूज एज एन बायोपेस्टिसाइड इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड. केमिकल पेस्टिसाइड का भी सेम है. Chemical pesticide harms to the environment. It pollutes the environmental cycle. Chemical fertilizer enters to the water body by the runoff water, so it also leads to the water pollution. Chemical fertilizer enters into the food chain and it harms to the mammals, it harms to the bird. But it is not about the biopesticide or biofertilizer. Biopesticides basically neem extract is used in several places. They are extracting the neem seeds and neem leaves, and that is used for as an biopesticide. So when you are using the neem extract, or in some places the lemongrass, tulsi and so many plants they are using as an biopesticide. So this is a natural biopesticide. So it is not it does not contain the harmful chemical. तो वो उतना ही मारेगा जितनी की जरूरत है, उतने ही पेस्ट जो है पेस्ट के ऊपर ही वो एक्ट करेगा. इससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, बर्ड्स को हार्म नहीं होगा, इससे जो है मैमल्स को हार्म नहीं होगा. तो ये फूड चेन में कभी एंटर नहीं करेगा बायोपेस्टिसाइड. ठीक है. सो कुछ मिलता भी है एक्स्ट्रा. एक आपने अगर गार्डनिंग आप घर में करते हो तो जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, नीम एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, तो दैट इज डाइल्यूटेड इन, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है डाइल्यूटेड इन सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इट कैन बी spread on the leaves of plant, green leaves of plant. So it is very convenient and good control, हम उसको बोलेंगे good pesticide. So many natural things are given in this. If you want to switch on this sustainable agriculture, means if you want a particular agricultural practice should be sustainable. Sustainable का मतलब हमको पता है शाश्वत हो, जो कभी ना खत्म होने वाला हो. So those things should be implemented in the agricultural practices. बचा हुआ जो इसका पोर्शन है that will be continue in the next video. So keep watching. If you are not yet subscribe the channel, please subscribe it, like it and share it, and please do comments on the video. It will helpful for improving myself, my lectures, and it is helpful to answer you if you have any doubt. So keep watching. I am going to complete this chapter after 2 videos. Thank you for watching.